There are things known and there are things unknown, and in between there are many doors. କିଛି ଆମକୁ ଜଣା ଥାଏ ଓ କିଛି ଆମକୁ ଅଜଣା ଥାଏ, ପୁଣି ଏହି ଜଣାରୁ ଅଜଣା ଆଡ଼କୁ ଥିବା ପଥ ଭିତରେ ଥାଏ ଅନେକ ଦ୍ୱାର। It is true that learning is a journey from known to unknown. Likewise, in communication also, we move from a state of known to unknown. ଇଂରାଜୀରେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଲା ବା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜଣାଥିବା କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ କହୁ ଓ ତାପରେ ଅଜଣା ବା ନୂଆ କଥାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁ। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନାର ଏପରି ସଜ୍ଜୀକରଣକୁ ବା ସୂଚନାକୁ ଏପରି ସଜାଇବାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସୂଚନା ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। In principle, words in a sentence are arranged in such a way that those that represent old, predictable information come first, and those that represent new, unpredictable information come last. नियम प्रकारे शब्दगुड़िक वाक्यर साधारणतः एपरी सजाई होई रहंती जे प्रथमे से माने पुराना और सहज रे अनुमान योग्य सूचना गुड़िक परिवेषण करती और जो सूचना मान नुआ होई थाए और सहज रे अनुमान करी हुए नाही सेपरी सूचना गुड़िक वाक्यर शेष भाग रे प्रकाश करती। उदाहरण स्वरूप गोटे वाक्य को अनुध्यान करा जाओ। My father's house has 4 bedrooms and 2 sitting rooms. एठारे my father's house सूचनाटी अनुमेय बा given information होइतिला बेले has 4 bedrooms and 2 sitting rooms अंशटी new information बोली धरा जाए। भाव विनिमय बा कम्युनिकेशन प्रक्रिया रे आमे जणारू अजणा आडको गति करथाओ। मने रखंतु in a sentence information can be of 2 types. First one is called given information and the second one is called new information. When you want to communicate new information to someone, the new information should become the focus of the sentence. कथाटा को टिके सहज रे बुझिबा। रिसीवर वा श्रोता पूर्वरु जहा जानी थाए ताहा हेउछि गिवन इनफॉरमेशन, ताहा को टॉपिक बोली मध्य कहा जाय पारे। ओ रिसीवर नुआरे जहा जाने ताहा हेउछि न्यू इनफॉरमेशन बा रिम बा कमेंट। तबे इनफॉरमेशन स्ट्रक्चर कहले कौन बुझिबा? इनफॉरमेशन स्ट्रक्चर और इनफॉरमेशन पैकेजिंग इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग given and new information in such a way that it is easy for the hearer to process. अन्य भाषा रे कहबा को गले इनफॉरमेशन स्ट्रक्चर हेउची जणाथिबा सूचना और नूतन सूचना को सठिक ढंग रे सजाई परिवेषण करिबा को बुझाए, जहा श्रोता पय बुझिबा सहज साध्य हुए। Dear students, I am giving a lot of hard work to prepare these videos. So share, comment and spread these videos to each and every corner of Odisha, to each and every student of Odisha. Thank you very much.